So, okay, gentlemen, first of all, congratulations, and switch on your videos first because I cannot talk to the wall. So kindly switch on your video. Okay. So you will be receiving individual intimation from FTII, but don't expect them to behave like a corporate sector. Okay, they are Sarkari people. Sarkari people behave in a Sarkari way. Whenever they will wake up, they will send the email to you people. So don't get panic. Okay, prepare yourself. Whether it happens after 10 days, 20 days, 30 days, it doesn't matter. If you are not prepared today, you will not be prepared after 30 days also. Remember. And don't feel very happy that you are being shortlisted. You are not being shortlisted so far. You just qualify the first round. And out of these 75 people, most certainly 85 people would be out. And you may be one of those 85 people. I am using a word maybe and may not be. Depend upon how intelligent you are. And how do you figure it out you are an intelligent person? Do the intelligent people have the seeing here? No. There are ways they can figure it out. If you are intelligent, you are duffer, you are a fool, super fool, what you are, they have their own mechanism to figure it out. So, in a week or maybe 2 weeks maximum, you will get the email, individual email, in which they will tell you the date. Earlier, the system used to be, I need to figure it out how they're going to do it online. Last year they did online, but when it used to be offline, one day was the orientation of audition, not orientation. Audition was there in NST Delhi as well as FTII Pune. People down south would go to FTII Pune, and people who come from north, they will go to NST. One day, 15 to 20-minute time was allocated to the student, in which you are being given a one piece of monologue. Okay. Now this monologue is in Hindi as well as English. People from North Belt, Hindi Belt people, even if you are from public school, I would very strongly recommend to pick up a Hindi piece, not the English piece. Why? Because you can express better in Hindi language when it comes to acting. Okay. Even if you are from public school background, here I would recommend to pick up a Hindi piece, not the English piece. Until unless you are down from south and you can't speak Hindi at all, then there is no choice. So piece for a girls and piece for a boy would be a different. So if you're a girl candidate, you will get a different piece. Boys candidate will get a different piece. Okay. Now that is the one piece which you need to prepare. They will give it to you, and one piece of 4 to 5 minutes maximum, not more than that. You need to choose and prepare by yourself. This was the tradition, and that's how the 10-minute goes. And maybe they might stop you after 2 minutes of your performance. Not necessarily they will allow you to perform for 4 minutes. Maybe you are performing nonsensically. They are not interested, so they figure it out within 2 minutes. So they will stop you. Then they will ask you to perform another one, and then they will ask you some questions. And out of that, 35 people would be shortlisted. Okay, 75 people, 40 people would be out, and 35 people would be shortlisted. They might ask you to perform something because they says, are you a singer, or if you can perform something, or you may play a musical instrument, maybe guitar, tabla, dholak, sarangi, whatever it is, or maybe just the harmonium. They might ask you to perform for that. That used to be the tradition. Now online, I don't know how they are going to do it. Maybe I will interview 1 or 2 people from the previous batch quickly within a few days' time, so that you will understand how the audition is going to happen. But I don't promise. I will try.
but I'm considering the way it used to be earlier. So now they would ask you to upload these two monologues, one which they will prepare, ask you, and one which you will be preparing by yourself. So I'm giving you a few tips about how to prepare, whether they give it to you or whether you choose it. When you chooses, you have a freedom to choose whatever you want. But when it is their choice, you don't have a freedom. So I would suggest, don't think FTII education is free. A lot of people have this nonsense in their mind. NSD is free. NSD is फोकट का चक्करबाजी. From the day one, 50 rupees का फॉर्म होता है. Select हो गए तो 9,500 का fellowship है. पहले 8,000 होता है, 9,500. NSD is फोकट का चक्करबाजी. But FTII is not फोकट. If you don't have money in your pocket, don't come there. As simple as that. So now, if you happens to be from any city, you might zero in one NSD graduate who can help you to prepare this monologue piece. I'm just suggesting, not necessarily, but this is just an idea. Maybe for 4 days or 5 days, you can have a engagement with him for 5 days or 6 days, maybe maximum, not more than that. 3 days, he can 1 hour, 3 days is a good time to prepare for that one monologue, and same is valid for another one. You might have to pay a lump sum of 5,000 or 6,000 rupees for him for 1 hour thing, and it has to be offline, not online. Okay, remember, online it doesn't work. So physical, you need to prepare, and you need to shoot it professionally. Professionally shoot it means you should have enough light on your face. For example, the light goes here, and if I switch off this light also, then this is going to be unprofessional. When you see my face, you can vaguely figure it out. I am a man having a very few hair on my head, glasses, but you really can't figure it out because the light is not enough. Now the light is good enough, and now it becomes bad. So this is called profession. एक थर्ड आदमी के खोपड़ी के ऊपर से जो बनियान बैठ के बैठा हुआ है एक आदमी, क्या नाम है आपका? मिस्टर बनियान, what is your name? Rahul, sir. Rahul, if you behave like this, you are out. Today I am declaring, don't be surprised if you don't get shortlisted. Don't be surprised. Why? Because तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर से एक हेलो आ रहा है. हेलो समझते हैं आप? You have become enlightened. Enlightened people have a halo in their khopdi, and you are wearing a banyan. Would you behave like this in FTII interaction? If you behave like this, you are out. No, sir. No, sir. Behave like this. You are behaving like this now also, so you think it is a casual thing happening. Had you not paid earlier for a video recording, you had to pay 1,000 rupees here. This video lecture which I am talking right now would not be available on the YouTube channel free, because a lot of things are free, but certain things come with a price tag. So if you behave like this, you are out. Write down on a piece of paper, take a print out and put it on your wall. If you are not going to be shortlisted, don't be surprised, because you are an unprofessional. People are looking for a professionals over there, not the people who are casual, relaxed. You knew that 12 o'clock there is a class and you are wearing a banyan and you landed up over here. Okay. So this is simply a warning. Many people are still struggling hard to get into the shortlist. Are you from SC, ST, OBC category? Which category you belong to, Rahul? Sir, general. General category. Okay. So general category, there are 5 seats. Now let me give you a little shock. Out of 5, 1 is reserved for some disability, etc., etc. That's why 1 is to they have called 36 people. According to my calculation, it should have been not 36 but more. But then I realized out of 5, 1 seat is reserved for some disability or something like that. In the past, it is a history. I'm not saying, I'm telling you the track record. Out of 5, minimum 2 girls candidates are there. So how many seats are left? 3. Okay. So 3 boys would be selected. Now 3 could be just 1 also. Last year, 4 girls candidates got selected. 2 from St. Stephen, 1 from Bombay, 1 from Pune, and 1 boy from somewhere, I don't know. Okay. So don't be under the impression there are 5 seats. There are actually, according to my calculation, there are 3 seats. 3 could be 2 also, it could be 1 also. If they don't find any sensible boy, only 1, enough, not required. Okay. So 2 would be must. It is an unsaid rule. Look into the past track record. Now 2 girls from general category would be there. Rest I'm not talking about. So actually there are 3 seats, and you really have to be the best.
Now I'm coming to the point, making of these videos. First of all, I will talk about that. It can be done on a video camera also of a mobile iPhone or maybe some i5 or some, I have some +1 camera, which is really, really good in terms of the resolution. Don't do this panning, tilting business, okay? Put it on a tripod at a eye level. When you're standing, there is a height of 5 feet or 6 feet or whatever, and there should be enough light in the room. If it is a room or if it is outdoor, if there should be enough light. Outdoor, there has enough light, obviously, but make sure that not too much of a bright nonsense is happening behind, sun is coming or something like that. It should be evenly lit. Preferably a shadow area is the best to shoot this thing, which is a quieter, okay? And put it on a tripod or maybe on a fixed frame. Maybe somebody can hold with the hand also, but no panning, tilting, no business like that, okay? And whatever your 4-minute piece is there, be closer to the camera. Don't stand 20 feet away from the mobile phone and perform over there. I have seen many fools doing that, okay? So maybe maximum 5 feet, 6 feet, 7 feet. So the camera, whether it's a mobile phone or whether it is your DSLR camera, will pick up the sound clearly. And it has to be a quieter place, preferably some jungle or whatever it is, where not too much of a traffic is there. It has to be quieter place, as simple as that. 5-minute recording, static camera, eye level, and that's it, okay? If it is not good, record it again, but not more than 2-3 times, because then you get exhausted. So simply two takes or 3 takes maximum, and choose one which is the best one. And when one, they will also be giving it to you, and you also can prepare with the help of somebody, as I suggested, that you can choose any NSD graduate from your city. There must be someone for sure. If you tell me the city, then I could figure it out who is based over there. So maybe I can help you out in that. That is an advantage of being a part of this video. Rest of the people who are saving their 1,000 rupees, they will not get the name of the people from their city who are graduate from NSD. I have a very, very strong network with NSD graduate all over the country. I could figure it out even if you are into some remote area. So that's one thing I can help you out, but not necessarily you need to seek a help of someone. You can prepare by yourself also. See to it in 5 minutes, there has to be a clarity of your voice. There should not be any fumble, but overall performance is very good. If there is a fumble at one place, it's okay, not a problem. It can happen, okay? So what to choose? Now question is what I am going to choose. That is $1 million question. I would say about myself. I'm not talking about yourself. I'm talking about myself. If I would have been at your place, there is a wonderful book of poetry written by Ramdhari Singh Dinkar called Rashmi Rathi. Rashmi Rathi is one of the best poetry, which is a meaningful poetry written from the point of view of Karna, basically, okay? And then there are other characters also. There's a character of Krishna also. There's a character of Gandhari, Draupadi. Every character is also being listed small, little bit. You can choose any piece out of that, and not necessary for example, if you are a female candidate. Me being a female candidate, I would choose a piece where as a Lord Krishna, when Krishna goes to offer a proposal of the peace, and he says that even if you give the 5 villages, Pandav will be very happy. And Duryodhan order him to arrest. Arrest means to take into the prison. And then we talk about that whom are you ordering to imprison? Okay, you are a fool. And then he shows his Brahma Roop, and that's a wonderful sequence. And it is being narrated by many people on YouTube. If you will find out, there is Muntasir, writer. He has also narrated Rashmi Rathi. There are a couple of more people also. But I would choose Rashmi Rathi. Why? It shows my interest in the literature. Without saying, it shows my interest, that I'm interested in literature. And B, the kind of piece I would choose. It has a variation of emotion. Every piece section has emotional variation. So you could choose one part, 2 pages or 3 pages of one particular character, not necessarily 2, 3 and all that. No, just one. One is enough. They say maximum 5 minutes. Not necessarily it has to be 4.99 minutes. No, it could be 3, it could be 4. They say it's maximum 5 minutes.
Okay, and then try to rehearse it with someone. If you could afford, you should be able to afford, because as I said, FTII is not free of cost. If you calculate the fee, food, accommodation, etc., 2-year course will come out to be roughly 3.5 lakh or something like that. I'm talking about each and everything, including food, accommodation. So that would happen later on. Many people can afford that, but they are not being shortlisted into the 75 people. So you are being lucky. Now invest a little bit of a money. Everything doesn't come free. Remember, everything does not come free. You have to invest into it. If you are able to find someone, great. If you feel that you can do it by yourself, or if you have a friend who is from theater background or is an actor who can help you out, wonderful. If you yourself is intelligent enough, nothing like that, but that one piece of your choice would categorize your understanding about A, selection, and B, as I said, how do you perform. Not necessarily you should have a makeup of that, not necessarily you should have a costume. If you are playing the Krishna, it means are you supposed to be dressed up like a Krishna? No. But if you can afford, I'm just saying there are dress places in your city where you can borrow the costume of these are very ordinary costume. 100 times you will find from Ram Leelas and things like that. So if you can afford, and again you can borrow the costume and do some small makeup, it will again show your sincerity. It will show your sincerity that you took the pain to bloody get the costume and did a little bit of a makeup of the Krishna thing, and then you had that performance. And maybe a little bit in a post you could add some music if you want to, but even if you don't put any music, it's equally good. But the costume will get you the character alive, A. B, it will also give an impression that you took the pain. You are not like this guy who woke up and wear the banyan and came in front of the camera. No, it shows your sincerity. It shows how much pain you took to get into it. And that is how you impress people. You don't impress people just like that. There is a mechanism how you can impress people without impressing them, without making obvious. So that reflects your sincerity, that you took the pain to find the costume of the Krishna, and you get into that thing. And I have seen some of the performances of Lord Krishna enacted by girls in NST. I have seen it. Okay, scene work. There was a play by Parsi style scene work, which was directed by Hima Singh a few years back. The right now third-year batch in NST, they performed in which one of the girl character was performed by a lady girl, and also a scene work again the Parsi style theater thing in which Krishna's costume enacted by a girl. So not necessarily Krishna has to be a man. No, not necessarily. Here it is the spirit of Lord Krishna which you need to project. And as I said, that it may be something else. For example, if I have a women character, if I'm a women character, I would prefer, or I would like, for example, though it is a cliche, hundreds of times people have done it in the past in the theater. For example, Andha Yug. Andha Yug has a last sequence of the Gandhari in which she curses the Lord Krishna. It's a very interesting sequence. I'm again giving you another option. That reflects how well read you are, how well aware you are that you have selected a piece which many people dies to perform on the stage. Gandhari into the Andha Yug, every third female character, whosoever is doing a theater, would love to enact Gandhari. But as I said, you could also pick up an English piece, maybe a doll's house character of a woman or a man. But have you heard about doll's house in your whole bloody life? That is the first question. If you have never heard, then how are you going to find it out? So how do you know which character to pick up? So it's important for you to pick up a character, or it could be sheer poetry of something else. What they are looking at is your voice quality, the way you speak, way you have a pauses, the way you bring out the emotion on your face, and that's what they are counting from the monologue. So this is in brief about the monologue. If you have any question, you can quickly ask me. I'll try to answer. सर ये जो खुद से रिकॉर्ड करना है इसके लिए क्या अभी से प्रिपरेशन शुरू करना है? फेल होने के बाद कर लेना, क्या जरूरत है? फेल हो जाओ पहले, अभी 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, कर लेना आराम से, क्या जरूरत है?
कब करोगे? जब लेटर आ जाएगा। सर ऑनलाइन ही होगा, ये कंफर्म है? आपने वहां पे पढ़ा है, वहां पे जो मेरिट लिस्ट का जो लिस्ट लगी है, मेरिट लिस्ट का यस सर, पीडीएफ नीचे। फाइल आपने पढ़ा है ध्यान से? यस सर। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सर दो नोट्स लिखे हैं कि यस, गाइडलाइंस एंड शेड्यूल्स विल बी प्रोवाइडेड एज पर द इंस्टीट्यूट, प्लीज कीप चेकिंग द वेबसाइट रेगुलरली। और सेकंड यार नहीं। लेट मी चेक। Yes, sir, 1 minute. स्क्रीन एक्टिंग, स्क्रीन एक्टिंग के अंदर नीचे लिखा हुआ है guidelines and schedule for audition will be shortly announced on FTII website. Candidates are advised to check FTII website regularly. Candidates apply under the, okay, here it is not mentioned. Here it is not mentioned, so it may be offline. I am using the word maybe, it may not be also, but so far other courses are concerned, it is happening online. At least the SRFTI I have read. I'm not sure about this FTI. Let me just see quickly another one also, if they have said this thing about symptomography or something like that. Okay, guideline schedule for shortly announced on the website. Okay, here it is also not mentioned. So till they announce, you don't know. Okay, you can assume, but since SRFTI is following online business, there is quite a probability that FTI will also follow, but not necessarily, as I said, till they announce it. Because FTI has physically started, so do the Calcutta also, but there is quite a probability that they will do it online. I told you there are Sarkari people, you need to remember always in your life, they are least bothered about taking any kind of a pain. So point number 2, you always remember, but don't think there the miracle will happen. In FTI में कोई miracle नहीं होता है. FTI में जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो, जिसको सोना है सो. FTI is a place where if you want to study, you will study. They will not teach you, but you will still study if you want to study. So that's another thing. So since they are Sarkari people, they might prefer to do it online because too much of a bloody headache. So let's do it online, as simple as that. So there is quite a probability. I don't know as of now, since there is no announcement, so you have to wait. But I believe and I feel at least for the acting, it should be face-to-face because it's a performing art, and though you can still figure it out via video and thing like that, but I hope it should be, I'm just hoping it should be physical. I hope. But as I said, nothing, they are the people, you should not expect anything from them, but that's the way they are. So that's one thing, prepare that, and don't make a very heavy duty file, but at the same time, it shouldn't be low resolution also. So 4-minute file, you should be able to upload all that terms and condition. You need to figure it out, how big the file should be there. So even if you are shot with a mobile phone, this file is not going to be too big until unless you shoot with a bloody 4K resolution, and then the file obviously become too heavy. Full HD 2K is equally good, no problem. I have seen good footage of the 2K resolution. So don't bother, don't get into this 4K business, okay? 4K will not make your performance brilliant. 2K Full HD is good enough because at the end of the day, they're going to watch on a mobile phone or maybe the desktop. Preferably desktop, I suppose, but even if it is a mobile, it's okay. So this is in brief about the thing. They also say that if you know some performing art or something, you could also play. So suppose, for example, if you know, for example, to play harmonium. Now, these things are being counted in NSD much more than the FTI. Because in theater, it is a good idea to, if you can play dholak, tabla, because there's a chorus over there, and if you can sing also, the chorus singing is required. Many a times, so body flexibility is very much important. So if you're a dancer, it's an asset to be a dancer for the NSD, not for FTI. FTI, they are least bothered about whether you play the harmonium or whether you're a dancer or thing like that. If they are not bothered about it, the ideology is different, theater ideology is different. So in NSD, they are considered as an asset. In FTI, it is not counted as an asset. But if you know something, and if they ask you, you can tell them, okay,
I know this, but if you don't know, it is not a drawback. Okay, it is not a, if it is not an asset, then it is also not a drawback. That's another thing. The duration should be more than 4 minutes. Say again. Duration of the monologue should be more than 4 minutes only. No, less than 4 minutes. Less than 4 minutes. Less than 4 minutes. They will specify in the condition. They will specify. I will also check out what was the condition last time. There must be some PDF file there. So I will shoot to 4 of you. And there was one more guy, but I think he has gone for a walk. Do you have any NSD graduate connection with in Lucknow city? Yes. Do you have any of the connection? There are. You can talk to them, and I will again connect you with a gentleman who was the director of the BNA, and he is based over BNA. there. And yeah, he was a former director of the BNA. Just discuss with him the overall payment business. Last time also I forwarded one of the person to him, and he's a very knowledgeable man. And it will be a privilege if he agrees to, if he has a time or thing like that, because he has a lot of commitment here and there. But since for 5 days or 6 days, or depend upon how many days do you need with him. So you could talk to them. You can message me, sir. I will message you his number, and I will also message him. What's your name? What's your name? Saurav Yadav. Saurav Yadav. Saurav Yadav. You're from Lucknow, right? Yeah, I'm from Lucknow. He's one of the best guy, very senior person. As I said, he's a founder, not founder. He's one of the director of BNA. So you can imagine his stature, and he's a very knowledgeable man and very decent person. Very, very decent person. So this is one thing. What I was saying. Sir. What I was talking. सर क्वेश्चन थे दो. हाँ बोलिए. सर एक आपने रश्मि रथी का बोला, तो रश्मि रथी जब परफॉर्म करते हैं तो वो थिएट्रिकल वो है कि लाउड सब्जेक्ट या कुछ, तो कैसा होना चाहिए? थिएट्रिकल का आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए आप ये बोल रहे हैं थिएट्रिकल क्या चीज होती है पहले समझने की कोशिश कीजिए. ओके. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर 3 ऑडिटोरियम है. 2 ऑडिटोरियम मेन की बात करते हैं. एक अभिमंच है जिसके अंदर 330 का कैपेसिटी है, और एक दूसरा ऑडिटोरियम है जिसका नाम है बहुमुख. बहुमुख में 7 से 10 फीट के डिस्टेंस पे ऑडियंस बैठा हो. तो मैंने आज तक जो भी वहां पर देखा है, कुछ एक परफॉर्मेंस थिएट्रिकल होती है, बट कुछ एक परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं एज इफ दे आर एक्टिंग फॉर द सिनेमा, बिकॉज दे नो ही इज सिटिंग ओवर देयर, व्हाई शुड आई शाउट. जो थिएट्रिकल जो चीज होती है उसमें हमेशा वॉल्यूम एक एलिमेंट होता है कि आपका वॉल्यूम लार्ज होगा. तो आपको किसने बोला कि चीख चीख के बोलो? किसने बोला आपको चीख चीख के बोलो? आपको तो नहीं बोला. तो मैंने पहले बोला कि आपका कैमरा 5 फीट के ऊपर है, तो मैं 5 फीट के ऊपर रश्मि रथी को रिसाइड कर सकता हूँ. आप इसलिए जाके वो मुंतशिर क्या नाम है उसका, उसको आप देखिए. बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसने, बाय द वे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. तो ही इज अ वेल नोन सेलिब्रिटी, इज अ लिरिक्स राइटर एंड ब्ला 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 ब्ला. बट रश्मि रथी बड़ी खतरनाक चीज है. रश्मि रथी को और बड़े बड़े एक्टर भी ठीक से नहीं कर पाते हैं उसको. उसमें एक वो एक्टर है जो राणा करके, उसने भी रश्मि रथी एक उसमें लिटरेचर फेस्टिवल में पढ़ी, और वो पढ़ के चला गया. मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब की बात करता हूँ जिंदगी, मेरे हिसाब से उसने रश्मि रथी इनेक्ट नहीं की, उसने रश्मि रथी पढ़ दी और चला गया. और लोगों ताली बजा रहे हैं गधों की तरह. क्यों? क्योंकि वो आशुतोष राणा जो कर रहा है वो सही कर रहा होगा. बट जो आदमी क्रिटिकल आदमी है, जिसको परफॉर्मेंस पता है, परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है, तो उसमें बहुत बड़ा खेल है उसके अंदर. रश्मि रथी जो है अपने आप में खतरनाक चीज है, समझे कि नहीं? पूरे नवरसास का खेल है उसके अंदर. आप क्या पिकअप करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, और उसको कैसे इनेक्ट करें. तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, बट जरूरी नहीं है आपको उसको लो, आप कुछ और भी उठा सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया अंधायुग के अश्वत्थामा वाला कोई पीस उठा सकते हैं आप कुछ और उठा सकते हैं उसमें से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मोनोलॉग है उसके अंदर 2-3 सिचुएशन है मोनोलॉग की, वो आपके इंटरेस्ट पे बनता है. मैंने आपको 2 एग्जाम्पल. अब ये मत समझना कि 4 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, 3 लोगों ने रश्मि रथी पढ़ दिया, तो वहां पे लोगों को लगेगा अरे तुम तो रश्मि रथी कर रहे हो. तो एक ही पीस अगर मैं 3 लोगों को दूंगा तो तीनों अलग अलग करेंगे. ध्यान रखना, एक ही पीस मैंने, अगर तुम लोग एक ही पीस चूज कर लेते हो, मान लो जैसे मैंने बोला अभी कि कृष्ण वाला पीस चूज किया, जिसमें प्रपोजल लेके जाते हैं उसके पास, गधे के पास, क्या नाम है उसका, दुर्योधन के पास. उसको समझ नहीं आता, और वो ऑन द कॉन्ट्ररी बोलता है. इट इज वेरी, इट शोज हिज इंटेलिजेंस.
He says that arrest him. And then he shows his Brahma रूप कि तू गधा, यहाँ तूने जो करना था तूने कर लिया, अब तू मुझे बोल रहा है कि अरेस्ट कर लो, तू पता है तू क्या कर रहा है. Then he shows his Brahma रूप over there. It's such a brilliant piece written in रश्मि रथी. एक जो ओरिजिनल महाभारत के अंदर जिसने वो कैरेक्टर किया है, क्या नाम है उस आदमी का, पुनीत इस्सर. पुनीत इस्सर बहुत सालों से महाभारत पे एक प्ले करता आ रहा है जो मैं बहुत सालों से नहीं देख रहा, बट अब की बार मैंने हिम्मत जुटा के 700 रुपए फूक के देख के आया. मैं दिल्ली में ऑडिटोरियम के अंदर अभी हुआ 2 दिन, राइट, सैटरडे संडे. उसने क्या किया है, वो रश्मि रथी से स्टाइल चुराया है, पोएटिक स्टाइल. बट तुम रश्मि रथी के टक्कर के डायलॉग नहीं लिख सकते हो. तो रश्मि रथी का 3rd ग्रेड पुअर फोटोकॉपी वर्जन, जैसे ओरिजिनल किताब होती है उसका एक घटिया फोटोकॉपी, फिर दूसरा घटिया फोटोकॉपी का फोटोकॉपी, और फिर एक तीसरा घटिया फोटोकॉपी का फोटोकॉपी. वो इतना घटिया वर्जन है इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, बट वो क्या है, विजुअली पीछे डिजिटल स्क्रीन है, कुछ होता है. तो लोग दिल्ली के ग्लैमर स्टक हैं, वो सब लोग पहुंच गए 700, 800, 1000, 2000 रुपए देके वहां पर, और बड़ा मजा अंदर सी है, एंजॉय कर लेते हैं. वो सब दिल्ली के लोग होते हैं. बट एनीवे, व्हाट आई एम सेइंग इज he inspired from Rashmi Rethie to have that poetic style of dialogue for the entire play, which is quite a job, even if he has done some C grade job then comparative to Rashmi Rethie. But it is still worth appreciating that he attempted that level to be at par with Rashmi Rethie, though he could not, but still it is worth appreciating. मजाक नहीं है उस टाइप के डायलॉग लिखना, आसान नहीं होता है. वो बहुत लंबा चौड़ा प्ले है, 2.5 घंटे का प्ले है, तो 2.5 घंटे में वो सब पोएटिक स्टाइल में डायलॉग लिखते लिखते लग गए होंगे उनको 1 साल कम से कम. So what I'm saying is, this is 2 example I gave you. You could pick up anything also. अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हैं. मोनोलॉग में कुछ भी हो सकता है, आप खुद का भी लिख सकते हैं अपना मोनोलॉग, किसी फिल्म का भी कोई पार्ट चूज कर सकते हैं आप मोनोलॉग में, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फिल्म आई थी जिसमें ओमपुरी ने, और बच्चन है और ओमपुरी और करीना कपूर है और गोविंद निलानी ने फिल्म डायरेक्ट किया. उसमें बच्चन और क्या बोलते हैं ओमपुरी के बीच में एक डायलॉग, जहां पर ओमपुरी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर बड़ी नास्टी कमेंट्स कर रहा है. वो सारा का सारा एक पूरा का पूरा पीस है, बट उसमें थोड़ा सा रिस्क है कि आपने वो क्यों चूज किया. एक ऐसा पीस चूज कर रहे हो जिसमें आप मुस्लिम कम्युनिटी को वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट, क्रिटिसाइज कर रहे हो. वो बड़ा, उसके ऊपर बहुत हंगामा भी हुआ था, बहुत लोगों ने लिखा भी था, बट वो एक मोनोलॉग है अपने आप में. वो बच्चन के अगेंस्ट जो है वो टक्कर में भिड़ता है ओमपुरी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो इन टर्म्स ऑफ द डायलॉग. आई एम टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस लेवल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट the political or religious connotation of that. But I would say that you choose any of the piece, but it should be some work. उसमें बहुत सारे आपको पीसेस मिल जाएंगे. आप और भी अंधा युग के अलावा और भी प्लेस है, आधे अधूरे के अंदर आपको कुछ मोनोलॉग मिल जाएगा. थिएटर के किसी भी आदमी से बात करेंगे तो, और गूगल में ढूंढेंगे, कुछ मोनोलॉग आपको मिल जाएंगे. हिंदी मोनोलॉग, वेल नोन हिंदी मोनोलॉग, कोई सा भी आप चूज करो. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और पूछ रहा है? सर मुझे पूछना है सर, नाम जो बताओ, मुझे समझ आएगा कौन पूछ रहा है. राहुल. राहुल. हाँ सर, जो ऑफलाइन अगर ऑडिशन रहा तो ऑफलाइन ऑडिशन के बाद जो बातचीत होती है, सो उसमें ऐसी चीजें कौन सी करनी चाहिए या फिर कौन सी अवॉइड करनी चाहिए? कुछ भी पूछ सकता है वो आदमी. मैंने, मान लो मुझ जैसा कोई पागल आदमी बैठा होगा वहां पर, बहुत सारे पागल लोग हैं मुझ जैसे, कुछ भी पूछ सकते. मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप मुझे माइजनर टेक्निक और स्टेनिस्लावस्की टेक्निक में 2 डिफरेंस बताइए, विच आर डिफरेंट इन बोथ. जो स्टेनिस्लावस्की में है माइजनर में नहीं है, और माइजनर में है स्टेनिस्लावस्की के अंदर. मैं ब्रेथ वर्सेस ग्रोटोस्की पूछ सकता हूं. मैं आपसे 8 एक्टिंग के टेक्निक के स्कूल हैं, मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं. तो ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम दे दिया भूल जाओ उनको, ऐसा नहीं है. जिंदगी भर याद रखना है, और उसमें से काम की चीज क्या है तुम्हारे, वो भी याद रखना, समझे कि नहीं. तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि उसके मूड में क्या चल रहा है, वो कितना तुम्हें, हाउ हार्ड ही वांट टू बी, हाउ हार्ड टाइम ही वांट टू गिव इट टू. सर वहाँ कुछ परम ज्ञान की भी बात कर सकते हैं. हाँ जी, अगर वो चाहें कुछ परम ज्ञान की भी बात कर सकते हैं. कौन सा परम ज्ञान? जो भी सर वो पूछे या हम बताना चाहें, मतलब वहाँ ऐसा कुछ बता सकते हैं जो उनको इंटरेस्टिंग लगे अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग. देखो एक बात क्या है कि आप वहां प्रोफेसर की पोस्ट के लिए नहीं जा रहे. आपका जो इंटरव्यू हो रहा है वहां स्टूडेंट की पोस्ट के लिए हो रहा है, ना कि प्रोफेसर की पोस्ट की.
तो कोई भी ऐसी हरकत जिससे ऐसा उनको लगे कि तुम प्रोफेसर बनने आ रहे हो यहाँ पर, आप बाहर हो जाओ। वो बात जो आपको फेंकने के चक्कर में आप बोल रहे हो वो कम से कम मत करिएगा। जो आपके मन में जो बात है आप केवल वही करिए। एज सिंपल, दैट इज व्हाट माय सजेशन। सर जो 2 मोनोलॉग प्रिपेयर करने हैं ऑफलाइन में, एक करना है, एक वो देंगे, एक आप। हाँ, सो फिर मतलब वो जो देंगे उसके लिए टाइम देंगे कि वो एक टाइम दिन होगा, पहले? 7-8 दिन का टाइम होगा। सो फिर वो परफॉर्मेंस सर एक के बाद एक रहेगा कि उसमें भी टाइम्स रहेंगे कुछ कि हाँ एक मोनोलॉग हो टाइम गया स्लॉट अभी? रहेगा, 4 दिन का ओरिएंटेशन होता है, 1 दिन का इंटरव्यू होता है। ये अभी तक की ट्रेडिशन रही है, फिजिकली बुलाते हैं तो भी और वैसे भी ऑनलाइन होगा तो भी। तो उसमें टाइम मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है टाइम मिलेगा। हर आदमी को जो है मोनोलॉग का भी टाइम मिलेगा, हर आदमी का इंटरेक्शन का भी टाइम मिलेगा। उसमें हो सकता है इंटरेक्शन के अंदर वो सब लोगों को ना दे, टाइम देते 10 से 10:15 तक तुम्हारा, 10:15 से लेकर 10:30 तक का दूसरे का, मतलब 20-20 मिनट का टाइम देंगे वो। और उसके बाद जो है ये सब चक्करबाजी नहीं होनी चाहिए, बत्ती चली गई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ऐसा बड़ंगा नहीं। एक बार गए तो बाहर हो जाओ। अपना सब प्लान बी तैयार रख के रखना। प्लान बी बहुत जरूरी है। एक मोबाइल हटक गया, कुछ सिग्नल नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी रेडी विद योर प्लान बी ऑल्सो। अभी आप सिस्टम से बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ इंटरव्यू दे रहा होता है FTII के लिए तो मैं अपने मोबाइल पे भी इसको सेट कर लेता, सारे के सारे को। मैं उसको मोबाइल से भी खोलता, यहाँ से भी खोलता। अगर यहाँ से सिग्नल चला गया तो मेरा मोबाइल ऑन रहे। अब बात समझे? बोलिए सर कोई बात। तो वन क्वेश्चन कि अगर ऑनलाइन ऑडिशन हो रहा है, मोनोलॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए मिड शॉट रहना चाहिए फिर फुल लेंथ शॉट रखना है? देखिए, फेस सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको वहां पर परफॉर्म कर, अब ये दोनों चीजें जो है वो आपको लोड करवाएंगे अगर ऑनलाइन होगा तो। आपसे वहां पे परफॉर्म करवा के नहीं देखेंगे, जहां तक मेरा आइडिया, ठीक है? क्योंकि वो सोलो परफॉर्मेंस आपकी देखना चाहते हैं तो वो आपने रिकॉर्ड करके दोनों लोड कर दिया, वो देख लेंगे। अब जो भी कुछ होगा वो इंटरेक्ट होगा ऑनलाइन में। अगर इंटरेक्ट किस तरीके से करेंगे, वो ग्रुप एक्टिविटी तो नहीं हो सकती, क्योंकि आप वहां बैठे हैं, वो वहां बैठा है, वो वहां बैठा है, कैसे ग्रुप एक्टिविटी करेंगे? ठीक है जी। तो उसमें ये हो सकता है कि 4 लोगों को, अब होने को हो भी सकता है कि 4-4 के ग्रुप बना दिए उन लोगों ने। अब जैसे 4 लोग आप बैठे हो, चारों को कैरेक्टर ABCD कर दिया और आप बोला अब आप परफॉर्म करिए, जहां से भी परफॉर्म करेंगे। प्रेफरेबली आई सेड, जैसे अभी आपका मिड शॉट है, बेसिकली इतना है ये, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ मिड शॉट में, दिस इज अ गुड एनफ। और वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल चाहिए उनको फ्रेम या वर्टिकल चाहिए, वो भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये, और पूछिए सर पुणे से कोई आपके इसमें NSD पास आउट कोई है? सर उनका नंबर वगैरह है सर? मैं आपको भेज दूंगा। नाम क्या आपका? राहुल इंगड़े। मैं पूना से जो है आपको 2-3 लोगों से कनेक्ट कर दूंगा। सर मुझे, अगर मैं गिटार प्ले करता हूँ बट मैंने म्यूजिक के अंदर से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, तो मुझे ये बताना चाहिए उन्हें या फिर नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। बताना मतलब अगर वो सीखी है, मैंने तो नहीं सीखी, मुझे तो नहीं आता गिटार। कितने लोगों को गिटार आता है? अरे को नहीं आता ना, तो कुछ खास बात हो गई है, खास बात होगी ना। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कोई म्यूजिक वगैरह के अंदर ट्रेनिंग ली है तो आप बताइए। लेकिन सर मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने क्लासिकल म्यूजिक या फॉर्मल नहीं लिया। अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको गिटार बजाना आता है, हाँ या ना? हाँ। बात करते। ओके सर, इंट्रोडक्शन में क्या क्या कवर होगा? जैसे अगर वो पूछेंगे इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने, तो उसमें एकेडमिक्स कितना परसेंट रहेगा, प्रोफेशन के बारे में कितना परसेंट रहेगा सर, उसका ब्रेकअप करके बताइए। कितने मिनट में इंट्रोड्यूस करना है आपको? मेरे पास 4 टाइप के प्रोफाइल हैं अपने। एक 2 लाइन का, एक 6 लाइन का, एक 15 लाइन। अगर वहां 10 सेकंड का टाइम है तो 2 लाइन मेरे बारे में पढ़ के बता दो। 2 लाइन कौन सी होनी चाहिए मेरे बारे में? नरेश शर्मा is a graduate from FTII Pune, worked in the film industry for 12 years. In 2006, he set up a film school in Craft and also an editor and a publisher of a magazine called Cinematography Art and Bollywood India. Full stop. कितनी लाइन बोली मैंने? 2 सेकंड बोले मैंने? 20। अब मेरे पास 6 लाइन वाला भी बायो, ठीक है, और मेरे पास 12 लाइन वाला भी प्रोफाइल है अपना। तो कितना टाइम है वहां पर? अगर मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नाटक खत्म होने के बाद स्टेज पे बुलाया जा रहा है फूल देने के लिए, तो वहां लोगों के पास टाइम नहीं है मेरी बकवास सुनने के लिए कि मैं कितना महान हूं।
मेरे बारे में 2 सेंटेंस जो मैंने अभी बोले, यही 2 सेंटेंस बोले जाते हैं, और ये मैं लिख के दे देता हूँ उस आदमी को जिसने इंट्रोड्यूस करना होता है। कुछ बकवास करेगा वो अपनी उठ पटांग की, उससे बोल मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो मैंने 2 लाइन लिखी है वो आप बोलो। आप अपने बारे में जानते हैं कि आप कितने महान हैं। आप अपने बारे में ये लिखिए, 2 लाइन, 4 लाइन और 6 लाइन और 8 लाइन। आपको टाइम दिया जाएगा 2 मिनट में, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। आपको टाइम दिया जाएगा 1 मिनट में इंट्रोड्यूस कीजिए। मुझ जैसा आदमी होगा तो वो बोलेगा 2 लाइन में अपने आप को इंट्रोड्यूस, बात खत्म। मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस किया अपने आप को 2 लाइन में, क्या कि नहीं? बहुत कुछ पता लगा मेरे बारे में। आपको ये पता लगा मैं FTII से ग्रेजुएट हूँ, 12 साल इंडस्ट्री में काम किया है। 2006 में हमने फिल्म स्कूल किया है। मैंने 4 इंपॉर्टेंट बात अपने बारे में बता दी आपको, 5 इंपॉर्टेंट बात। मैंने सब चीजें तो नहीं बताई कि मेरे पासपोर्ट के अंदर 25 कंट्री का वीजा लगा हुआ है, मैं फ्रांस भी गया हूँ, जर्मनी भी गया हूँ, यहाँ का भी क्यूरेटर हूँ, फलाना भी हूँ, इतनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, 200 एड फिल्में शूट की हैं, और ये किया है और वो किया है, बम फेंका है हिरोशिमा में और नागासाकी पे। ये सब टाइम नहीं है। आपको कितने सेकंड में इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है, उसके हिसाब से आप अपना लाइन पहले से तैयार रखिए। बात समझ आ गई? यस सर। स्ट्रेंथ और वीकनेस भी सर तैयार रखें, मतलब कि वो ही पूछ सकते हैं स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तैयार रख सकते। मुझसे पूछिए आप, मेरी वीकनेस क्या है? क्या है सर, बताइए। माय वीकनेस इज आई लूज माय टेम्पर। Short tempered, you are short tempered. I'm a short, but I have controlled this temper when I was 25 years old. Now I have reduced that to 10%. So within 25 years, I've controlled my temperament. If I used to lose my temper 10 times in a day, now I lose once in a day. Okay. What is my strength? I am a well-organized person. I am a disciplined man. I am a hard-working man. Many people are ऐसे बताएं। हाँ जी। पर ये अगर बताएंगे डिसिप्लिन या हार्ड वर्किंग, तो ये उनको क्लीशे लाइन तो नहीं लगेगी कि ये तो सब मैंने भी आपको बोला, आपको क्लीशे लगी? नो सर, ये स्ट्रेंथ वाली लगी। I am a organized man. I am hard-working person, and I am highly disciplined. Did you find this line as a cliche? A little bit, sir. How much percent? Are you organized person? Are you organized? You are asking me, sir. I am asking you. Are you organized person? No. So, even if it is a cliche, it is better. Even if it is a cliche, at least I have an edge over you. Even if it is. Now, if you would say that, I would ask a question. Prove it. Prove it that you are an organized person. That's why I refrain from speaking that I'm organized and all that. Again? Sir, I refrain from speaking like that. I am, so I can prove it. Organized, then I have to prove it. Because I am, so I can prove it. That's why. Yes. सर बोलिए। अभी जैसे आपने बोला स्टेनस लेविस की, माइजनर या फिर ब्रेथ की टेक्निक्स के बारे में, तो अगर किसी ने उनको नहीं पढ़ा है डिटेल में, बिकॉज ऊपर का अगर पढ़ा है तो गांव जाके खेती करो, दरभंगा जाओ और खेती करो। दरभंगा कहाँ है? गूगल मैप में ढूंढो। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि मतलब ये आपको पता होना चाहिए। माय आंसर। तुम FTII आ रहे हो, टिम्बकटू इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने नहीं जा रहे। इसका मतलब यह है कि आप गंवार आदमी हैं। यू आर नॉट ए हार्ड वर्किंग पर्सन। अगर आप हार्ड वर्किंग आदमी होते तो 7 किताबों का प्रिंट आउट निकाल के, PDF फाइलें दुनिया भर की थोक के भाव में नेट पे लगी हुई हैं, मैंने भी वहीं से डाउनलोड किए हैं। ठीक है जी। आप, अब मेरा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। टेल मी वन बुक written by a Indian author about acting. My question is, one book, name of the book and the author written by an Indian author on acting. बहुत बड़ा difficult question on है। filmmaking, on filmmaking तो सर बकवास मत करो, गंवारों वाली हरकतें मत करो। Film making is the name of a field.
इंजीनियरिंग करनी है, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। मैंने क्वेश्चन क्या सर, पूछा? मैंने आपसे क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इकुते हियर आई सेड नेम मी अ बुक ऑन एक्टिंग रिटन बाय ए इंडियन। सर मेथड एक्टिंग पे एक बुक है सर, इंडियन ऑथर की, तो प्रसन्न जी की है। तो मैंने ही बताया पहले तुम लोगों को, बट तुमने पढ़ी नहीं होगी। ये मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ आदमी की कि किसने पढ़ी है कि किसने। आपने पढ़ी है? नहीं सर, नाम। तो आपने ये सब 7 किताबें नहीं पढ़ी, तो आप 1 साल से सो रहे हैं मेरे हिसाब से। मैं अपने हिसाब की बात करता हूँ, मैं औरों के हिसाब की बात नहीं करता। हो सकता है ठीक से समझ ना आया हो, वो एक अलग बात है। पूरी किताब एक समझ नहीं आती है, उसको 10 बार पढ़ोगे 10 साल तक, तब 10वें साल में जाके पल्ले पड़ेगी वो किताब। ठीक है, तो पढ़ी ही नहीं है तो तुम कर क्या रहे हो घर में बैठ के? इंस्टाग्राम में लड़कियों के फोटोग्राफ को लाइक करने के अलावा क्या करते हो जिंदगी में? तुम करते हो? पता लग गया मुझे। देखो 75 में से 10 लोग चूज करने हैं मुझे, तो मैं किसको चूज करूंगा? जो बोलेगा हाँ मैंने माइसेल्फ के ऊपर किताब पढ़ी। मैं देख लूंगा कितनी किताब पढ़ी है तुम। तुमने नाम लिया प्रसन्ना का, तुम झूठ बोलोगे कि मैंने इंडियन मेथड एक्टिंग के ऊपर किताब वो पढ़ी है प्रसन्ना की? मैं 2 मिनट में पता कर लूंगा तुमसे, अभी लगे आ तो। पढ़ी नहीं है सर, सिर्फ नाम सुना। बता रहा हूँ, तो तुम झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे, ध्यान रखना। हाँ, ये इसलिए तो नहीं, ये सब रेफरेंस करके चलना पड़ता है सर, ये आपने बताया तो याद है, मतलब झूठ बोलोगे 2 मिनट में फंस जाओगे। वहां खिलाड़ी लोग बैठे सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि मतलब सब पढ़ी है, मान लो साइंस ले उसकी मेथड एक्टिंग पढ़ी है किसी ने, बट उसके नुएंसेस एक बार में समझ में नहीं आते किसी को। समझो तो मतलब तीसरी बार समझो, चौथी बार समझो। क्योंकि वो फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे उसमें से, और बाई चांस अगर आपको नहीं आया तो फिर उसका बैड इंप्रेशन भी आ दूसरे सकता है। आदमी को आता है, जिसको आता है उसको ले लेंगे, जिसको नहीं आता वो अगले साल आ जाएगा। क्या दिक्कत है? बुढ़े थोड़ी हो रहे हो तुम लोग। क्या उम्र है तुम्हारी? 24 साल। 2-3 साल फेल होते रहो, क्या फर्क पड़ता है 2-3 साल फेल होने में? क्या फर्क? बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो पता होना चाहिए ना। और सर अगर वो अगर आपको किसी डायरेक्टर के साथ काम करना है या वो कुछ भी पूछना है, आपको कोई फेवरेट डायरेक्टर है, तो मतलब ये सारे इंटरव्यूज के क्वेश्चन है, तो उसमें आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए वो सब? देखिए आप किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं बताइए आप? इम्तियाज अली। इम्तियाज अली क्यों? स्टोरी टेलिंग सर मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत और लोगों को स्टोरी टेलिंग नहीं आती? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो मेरे क्वेश्चन, ये बकवास करना बंद करो। क्वेश्चन को सुनो और गिने चुने शब्दों में उसका आंसर दो। मैं क्या रिपीट कर रहा हूं? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और गिने चुने शब्दों में उसका आंसर दो। मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या स्टोरी टेलिंग और लोगों को नहीं आती? क्या संजय लीला बंसाली को स्टोरी टेलिंग नहीं आती? क्या राजू हिरानी को स्टोरी टेलिंग नहीं आती? राजकुमार हिरानी को के अलावा और दुनिया भर के लोग बैठे हैं, क्या इनको स्टोरी टेलिंग नहीं आती? आती है। क्या डिफरेंस हुआ? स्टोरी टेलिंग उसको अच्छी आती है, क्या ऐसा क्या है उसकी स्टोरी टेलिंग में? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, उसका म्यूजिक दिखाने का जो पूरा कनेक्ट है, या फिर स्टोरीज में वो जो कॉन्फ्लिक्ट बनाता है। म्यूजिक को तो म्यूजिक कंपोजर बनाता है, डायरेक्टर थोड़ी बनाता है। नहीं सर, लेकिन पुट इन तो डायरेक्टर ही करता है ना मूवी के अंदर, कैसे पुट इन करना है या फिर क्या शो करना है। मैंने बोल दिया ये सीक्वेंस है, इसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक बनाओ। तो बैकग्राउंड म्यूजिक कौन कंपोज करेगा? बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर करेगा, इम्तियाज अली थोड़ी करेगा। इम्तियाज अली तो ये बोलेगा कि आपने म्यूजिक बनाया अच्छा है, बेकार है। ऐसे तो सर अगर एडिटिंग की बात करेंगे तो गाना सुन के 2 गाने मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ठीक है? तुम तो इम्तियाज अली नहीं हो ना। तो मैं 2 गाने सुनाता हूँ, एक वाहियात गाना जिसके अंदर कोई कंपोजिशन नहीं है, और एक ऐसा गाना जिसके अंदर कंपोजिशन है। उतना तो तुम भी समझ जाओगे, तो समझ जाओगे ना। हाँ। तो उसमें कौन सी ब्रह्म ज्ञान की बात होगी? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि लेकिन ऐसा है ना कि सर एक ऐसे एडिटर भी अगर एडिटिंग कर रहा है, फिर सिनेमेटोग्राफर जो शॉट्स ले रहा है, तो उसमें भी क्रेडिट तो आप डायरेक्टर को भी दोगे ना कि उसका भी इनपुट था उन शॉट्स के लिए। डायरेक्टर का सेंस ऑफ कंपोजिशन का खेल होता है, बस बात खत्म। कैमरा मूवमेंट भी कभी 90% ऑफ टाइम इट इज अ सिनेमेटोग्राफर हु डिसाइड द कैमरा मूवमेंट। लाइटिंग इज टोटली डोमेन ऑफ द सिनेमेटोग्राफर। डायरेक्टर का डोमेन केवल कंपोजिशन है, टू सम एक्सटेंट कैमरा मूवमेंट आल्सो।
बट लाइटिंग का जो खेल है वो 90% होता है। 10% कंपोजिशन और कैमरा मूवमेंट को मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ, 20%, 80% खेल सिनेमेटोग्राफर का। सर इम्तियाज मैं अली पूछ रहा हूँ शूट कि क्या लोकेशन का विजुअलाइजेशन बहुत सही करता है, मतलब जैसे ड्रीम्स का अकीरा कुरोसावा है सर, आपको जो लगता सबसे है लास्ट संजय एपिसोड है। लीला बंसाली विजुअलाइजेशन नहीं आता? संजय लीला बंसाली को आता है सर, उन्हें भी आता है, लेकिन मेरे उसकी हिसाब शूट से संजय लोकेशन लीला बंसाली के टक्कर में इम्तियाज अली कहीं नहीं खड़ा होता विजुअलाइजेशन के अंदर। खड़ा होता मतलब दूर दूर तक 10 मील तक खड़ा नहीं होता इम्तियाज अली संजय लीला बंसाली के आगे विजुअलाइजेशन सेंस के अंदर। उसके एक एक फ्रेम के अंदर सिंपल सी छोटी सी चीज होती है, उसके लिए खतरनाक सेट लगता है उसका। इम्तियाज अली आज तक वहां पहुंच नहीं पाया अपनी जिंदगी में। सर मुझे लगता है वो जो नॉर्मल रिलेशनशिप के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं वो उनसे बेटर कोई नहीं दिखा सकता। क्या क्या दिखाते हैं नॉर्मल? नॉर्मल कोई ह्यूमन रिलेशनशिप है उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं वो कोई फॉर एग्जांपल कोई रिलेशनशिप में नॉर्मल कपल है। रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, वो आप ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा आदमी ऐसा नहीं दिखा सकता। और बताइए। बस सर, तो वही ना, वो स्टोरी टेलिंग का पार्ट है जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है। ठीक है, आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि सर ये सारी चीजें जैसे आपने बोला कि पूछा डायरेक्टर का जाएगा काम होता है मेजर। बताइए, पूछा जाएगा तो बताइए। बार बार मैं बोल रहा हूँ गिने चुने शब्दों में, वहां टाइम मिलेगा बेटा। यहाँ पर जैसे 1 बजे मैं यहाँ से स्विच ऑफ कर लूंगा अपना खेल। मैं अलार्म वाला आदमी हूँ, 12 बजे अलार्म लगता है। मैं ऐसा नहीं घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ 12:10 पे बनियान पहन के, अभी अंडरवियर पहन रहा हूँ। समझे मेरी बात? टाइम मिलेगा आपको, बोला जाएगा 4 सेंटेंस में बताइए कि आप किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं। 4 सेंटेंस में, वो 4 सेंटेंस आपका रीजन बताएं। ये कारण है कि मैं इसलिए संजय लीला बंसाली के साथ काम करना चाहता हूं। ठीक। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, 4 सेंटेंस, 4 पॉइंट, दैट्स इट। और जैसे सर अभी आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि उससे बेटर भी लोग हैं, तो वो ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ठीक। टेप लगा दोगे उनके मुंह पे जाके? तो अरे तुमने एक नहीं क्वेश्चन मत पूछो। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ कि ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हो सर। उसमें शॉर्ट फिल्म इंटरोगेशन है, वो ग्रिलिंग इंटरव्यू है। 10 लोग लेने हैं वहां पर। या तो तेरे मामा जी जानते हो, ताऊ जी जानते हो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, तो तेरे मामा जी ताऊ जी जानते नहीं, ठीक है? तो फिर कैसे घुसोगे? अपने कैलिबर बस बलबूते। ये मत समझना कि वहां 75 लोग जो बैठे हुए तो तेरी तरह ही हैं सब गांव खिलाता है। कुछ लोगों ने सोर्स भी लगा रखी है। तुझे नहीं पता वो एक अलग बात है, मुझे भी नहीं पता। जिसने लगा रखी है उसने लगा रखी। इंटरव्यू एक ऐसी चीज होती है जिसमें सोर्स का भी खेल होता है। सर जैसे सिनेमेटोग्राफर के लिए शॉर्ट फिल्म्स एक मेन पॉइंट होता है, तो ऐसे एक्टिंग में बुक्स के अलावा, मतलब मेथड के अलावा और कौन सी चीजें ऐड हो सकती है? लुक्स का एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं, पहली बात। सर लुक्स नहीं सर, स्टार के लिए, स्टार बनने के लिए लुक्स का लेना देना होता है। एक्टर बनने लुक्स के नहीं लिए बोला मैं उसका कोई लेना देना। सर, लुक्स नहीं बोला मैं एज एक्टिंग मेथड्स के अलावा और कौन सी चीजें उसमें ऐड हो सकती है? देखिए मेथड जो है सारा का सारा टेक्निक्स की बात करता है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जब आप उनको पढ़ोगे उसमें डिसिप्लिन भी एक चीज है। हाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन, ये भी एक्टिंग टेक्निक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझे? 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ कैफू?